हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोबारा से मैं अपना हेयर केयर रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये जो आपको लाइन दिख रही है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है वाइडर होती जा रही है, क्योंकि यहाँ से बाल जो है कम होते जा रहे हैं। तो ये घनी करनी है मुझे, तो इसके लिए मैं आज लगा रही हूँ प्याज और मेहंदी को मिक्स करके। तो मैंने उसका पेस्ट बना के रख लिया है। पिसी हुई मैं मेहंदी मंगा लेती हूँ और उसमें प्याज पीस के डाल देती हूँ और मिक्सअप कर लेती हूँ। तो अब मैं ये बालों में कॉम्ब कर लूँगी। उसके बाद में मैं मम्मी मेरे बालों में अप्लाई कर देंगी और मम्मी के बालों में मैं अप्लाई कर दूँगी। तो इतना पेस्ट है, मैंने बोला कि मम्मी आप भी लगा लो, फिर मैं भी लगा लेती हूँ। तो अभी मैं पहले बालों को कॉम्ब कर लेती हूँ, फिर चलते हैं नीचे। और ये मैंने नाइट गाउन अपना डाल रखा है, तो पहले कॉम्ब कर लेती हूँ। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. In no face I recognize. पहले मैं पेस्ट कर लेती हूँ, टूथपेस्ट। तो उसके बाद में जो है जाऊंगी मैं नीचे पेस्ट करने के बाद में टूथ ब्रश पेस्ट। अब चलती हूँ मैं नीचे। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. In no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall. मैं तो खाना भी खा चुकी। आज बनाए थे तोरई चावल और रोटी। खा पी के मैं फ्री हूँ। अब मुझे चढ़ी नींद क्योंकि बालों में मेहंदी लगी होती है तो मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठ के पढ़ने की कोशिश करूँगी। अगर नींद थोड़ी देर रुक जाती है तो, नहीं तो फिर मैं सो जाऊँगी। किसका है ये? आपका पार्सल है? अच्छा, लाओ खोलते हैं इसको। ठीक है, अनबॉक्स करते हैं। पता है स्टिकी नोट्स मंगाए हैं मैंने, एकदम बिल्कुल कैसे वाले हैं ये? पिंटरेस्टी वाले। ये है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं ना? ये आगे है। हाँ, ये आगे है वो। बहुत अच्छे हैं। और ये वो आगे है। अच्छा हाँ। पूरी तरीके से सूख गई है और अब मैं जा रही हूँ अपनी हेयर वॉश करने। मैंने कर लिया, अब इनको सुखाऊंगी जैसा कि डेली मैं करती हूँ, हमेशा करती हूँ। सुखाने के बाद कॉम्ब करूँगी। तब तक मैं थोड़ी सी चाय बना लाती हूँ, थोड़ी सी चाय पी लेती हूँ, अपना स्टडी टेबल पे बैठ के थोड़ी देर पढ़ लेती हूँ। Magnolia town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia town was humming, smoke lay on the ground.
Hear no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall. The church bell moaning down on Beale Street side. Heard the church bell moaning down on Beale Street side. Sounded like forgiveness for the tears I try to hide. Now I'm sitting with this guitar, strings hum like they know. Yeah, sitting with this guitar, strings hum like they know. When love don't live no longer, that blues is all you own. Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Hear no face I recognize, and my baby can't be found. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. मेरे बाल ड्राई हो गए हैं और अब मैं इनमें कॉम करने जा रही हूँ और आज मैं अपना हेयर कट करूँगी। तो ये नीचे काफ़ी बाल ऐसे हो गए हैं तो इनको कट करना है मुझे। Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Yeah, Magnolia Town was humming, smoke lay on the ground. Hear no face I recognize, and my baby can't be found. I
I left that place in summer, swore I'd be back by fall. I left that place in summer, swore I'd be back by fall. Now the porch is bare and broken, and her name's gone from the wall. The church bell moaning down on Beale Street side. मैंने हेयर कट कर लिया है, बहुत ज़्यादा मैंने हेयर कट किया नहीं है अपना, थोड़ी थोड़ी नीचे से जो एक्स्ट्रा बाल थे वो कट कर लिए हैं। वैसे मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ बट मेरा मन नहीं है ज़्यादा अपने बालों को कट करने का। अब इसका क्या है कि जो मैं रेमेडीज़ यूज़ कर रही हूँ उससे हेयर ग्रोथ होगी, जिसमें हेयर फॉल कम होगा, बाल घने होंगे, तो वो मुझे पता चलेंगे क्योंकि थोड़े से मैंने बाल काटे हैं और कुछ बालों की लेंथ ठीक ठाक है और काफ़ी मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ये मेरे बाल हैं, ये नीचे जो इसकी ग्रोथ है ये कम है और ऊपर ठीक लगते हैं ये। तो जो ऊपर मेरे बाल इतने घने हैं ये मुझे पूरी लेंथ तक घने करने हैं, इस वजह से मैं हेयर कट ज़्यादा नहीं कर रही हूँ। ज़्यादा हेयर कट कर दूँगी तो वो घने के घने ही दिखेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो बाल छोटे हैं वो भी उतने ही लंबे हो जाएं जितने अभी मेरे हैं। हल्का सा जो श्रृंगार है मेरा वो कर लेती हूँ, मांग वांग भरनी है, मुझे बिंदी लगानी है, लिपस्टिक लगानी है, तो वो मैं कर लेती हूँ। बाकी स्किन मेरी साफ़ है और जो रेमेडीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ उनसे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है स्किन केयर में। तो गाइस हो गया मेरा मेकअप, और मेकअप क्या कहना है कि श्रृंगार जो भी है। अब ये बस ब्लॉग इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।